Hello and welcome back to yet another video of the chemistry series. And in this particular video, we'll be completing carboxylic acids. We have already done the aldehydes and ketone part of the lesson. So moving on and taking the lesson forward, without further ado, let's get started. Carboxylic acids. Carbon compounds containing a carboxyl functional group, COOH. So the functional group goes like this. Here we go. This is the carboxylic group. The carboxyl group consists of a carbonyl group, this one, attached to a hydroxyl group. Hence its name carboxyl. Carboxylic acids may be aliphatic or aromatic depending on the group alkyl or aryl attached to carboxylic carbon. तो हम basic chain कौन सा ले रहे हैं, whether it's aliphatic or it's aromatic, तो हम कहते हैं whether it's aliphatic or aromatic carboxylic acid. Large number of carboxylic acids are found in nature. Some higher members of aliphatic carboxylic acids is C12 to C18, known as fatty acids, occur in natural fats as esters of glycerol. Carboxylic acids serve as starting material for several other important organic compounds such as anhydrides, esters, and chlorides, amides, etc. Moving on to nomenclature, which is the basics in the first paragraph, जो हम थोड़ा बहुत bio में भी देखते हैं, fatty acids, etc. So about the nomenclature, since carboxylic acids are amongst the earliest organic compounds to be isolated from nature, a large number of them are known by their common names. क्योंकि हम इन्हें बहुत ancient times में हमने इनको discover किया है, इनको isolate किया है, so we can also consider their common names, even they're important. And common names, basically they have a particular history. Find different histories for different compounds based upon shayad origin, yeah, something that's related to the compound. The common names end with the suffix ic acid and have been derived from Latin or Greek names of their natural sources. For example, formic acid was first obtained from red ants, क्योंकि Latin में formica means ant. Acetic acid from vinegar, because Latin acetum means vinegar. Butyric acid from rancid butter, because butyrum would mean butter. Fine. In the IUPAC system, aliphatic carboxylic acids are named by replacing the ending E in the name of the corresponding alkane with oic acid. Basically, हम एक root word लेते हैं हमारा alkane और उस alkane का E जो है replace करते हैं oic acid से. In numbering the carbon chain, the carboxylic carbon is numbered 1. For naming compounds containing more than one carboxyl group, the alkyl chain leaving carboxylic groups is named, and the number of carboxyl groups is indicated by adding the multiplicative prefix dicarboxylic acid, tricarboxylic acid, etc. to the name of parent alkyne chain. The position of COH groups are indicated by the Arabic numeral before the multiplicative prefix. Some of the carboxylic acids along with their common name and IUPAC names are listed in the table given. तो जब हमारे पास दो से ज़्यादा या दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होंगे तो हम अल्काइल चेन को नंबर करते हैं एक्सेप्ट फॉर द कार्बोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, उनको नंबर नहीं करते. और फिर डाई ट्राई दिस इज वेरी कॉमन, वी नो, हम ये यूज़ करते हैं फॉर 2 फॉर 3 एक्सेट्रा. एंड ये टेबल अगेन, formic acid for methanoic acid, the common names, right? Acetic acid for ethanoic acid, and we know there's some history related behind it. Then propanoic acid ke liye propanoic acid, this is propionic acid, and this is propanoic acid. Butyric, butanoic, isobutyric, similarly oxalic acid, malonic acid, succinic, glutaric, adipic. There's this trick, जैसे हम याद करते थे, it was, and the trick was Ohm's gap, right? I think you might have also heard about it at some point or the other. So O means zero basically for oxalic acid, यानी जो हमारे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोई और कार्बन नहीं है, just so you can remember. Then melonic acid में you have two carboxylic groups, उनके बीच में एक है CH2, then for succinic 2, then for glutaric 3, 4 and similarly. Fine. तो ऐसे आप कुछ dicarboxylic acids को याद रख सकते हैं about the common names, and they are often asked as well. Fine. Some more again, benzoic acid, huh? Benzoic though is the common name. Then phenyl acetic acid, phthalic acid. This has also been asked. Phthalic, you should know. Okay? This is basically benzene 1,2-dicarboxylic acid. Then about the structure of the carboxyl group. In carboxylic acids, the bonds to the carboxyl carbon lie in one plane and are separated by about 120 degrees. The carboxyl carbon is less electrophilic than carbonyl carbon because of the possible resonance structure shown below. अब यहाँ पे हम देखते हैं, this is your C double bond O. यहाँ पे resonance is possible. Lone pair pi conjugation. Fine. This will go here. This comes here.
इनने खुद ही दिखाए हैं arrows, I'm not going to mess this up. Then this goes here, fine, this is a negative charge, this is positive charge, and these are all the resonating structures. तो इसीलिए क्योंकि इसमें resonance stabilization है, electrophilicity कम हो जाता है, ठीक है, as compared to the carbonyl carbons या बाकी. Fine. Next is we have methods of preparation. Okay? Again, first is from primary alcohols and aldehydes. Alcohols और aldehydes को हम oxidize करके ही carboxylic acids बनाते हैं. I think इससे पहले भी हमने कहीं discuss किया था. Primary alcohols are readily oxidized to carboxylic acids with common oxidizing agents like potassium permanganate, KMNO4 in neutral, acidic or alkaline medium, or by potassium dichromate. ये तो हमारे evergreen oxidizing agents होते हैं. You'll find them somewhere or the other. ठीक है? तो इनको यूज करेंगे, सिंपली ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को, एल्डिहाइड्स को, और क्या मिलेगा वहां से, वी कैन गेट आवर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन chromium trioxide in acidic media. You can see अब chromic tri chromium trioxide in presence of H2SO4 is the Jones reagent. So this is again something memory based. याद रखना है Jones reagent. You can have यहाँ पे an example दिया है the decanoic acid में convert हो रहा है. Fine, you have an alcohol converting it into acid by basically oxidizing. And what is oxidizing agent you're using is basically chromium trioxide in presence of acidic medium. Fine, उसको Jones reagent बोलते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्डिहाइड से भी अगेन फ्रॉम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, तो क्योंकि उनमें उतना फर्क नहीं होता है. कमिंग टू अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन पहले एग्जांपल पे aromatic carboxylic acids can be prepared. अब अगर aromatic ही carboxylic acid चाहिए by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid or acidic or alkaline potassium permanganate. ठीक है, chromic acid ले लिया या potassium permanganate, alkaline या फिर acidic. Fine, these are basically oxidizing agents. Fine, the entire side chain is oxidized to the carboxyl group. ये देख रहे हैं आप, ये पूरा methyl is getting converted into first COOK, eventually hydrolysis के बाद ये COH दे रहा है. Fine, again oxidation हो रहा है. Primary and secondary alkyl groups are oxidized in this manner, while tertiary is not affected. Fine. Suitably substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acids with these oxidizing reagents. Fine. So again, आप basically alkyl group ले लिया, कोई भी alkyl chain ले लिया attached to our benzene, ठीक, उसको हमने suitable oxidizing agent के presence में we have converted it into our aromatic carboxylic acids. Fine. And we can also take alkenes in place of these alkyl groups, but you know, obviously of suitable size. फाइन, बट टर्शरी अल्काइल्स अगर हमने ले लिया उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता. Next is from nitriles and amides. Nitriles are hydrolyzed to amides and then to acids in the presence of H positive or OH negative as catalyst. Fine, again हम यहाँ पे acidic basic कुछ ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे हमारा ये nitrile हो गया and we are converting it into an amide, acid amide. ये हमने पहले ही देखा हुआ था in the beginning of aldehyde ketone. This is our acid amide. Again in presence of H positive, OH negative, this is going to give you RCOOH. Mild reaction conditions are used to stop the reaction at the amide stage. तो आपको amide चाहिए, आपको acid चाहिए, depends. Fine, basically what we do is they are hydrolyzed. Fine, और यहाँ पे again ethanamide हाइड्रोलिसिस करेंगे, एथेनोइक एसिड मिलेगा. बेंजीनामाइड हाइड्रोलिसिस, you get benzoic acid and ammonia. Not going into the depths of the mechanisms and stuff because it's just, you know, फिर highlights किसको कहेंगे, right? So then we have from Grignard reagents. Grignard reagents react with carbon dioxide, basically the dry ice, ठीक है, dry form में, to form salts of carboxylic acids, which in turn give corresponding carboxylic acids after acidification with mineral acids. So even if you get a carboxylate ion, you get salts of carboxylic acids, you usually get them, right? But we have another way we can actually hydrolyze it और हमें वापस से हमारा carboxylic acid ही मिलता है, fine? So this is how we can prepare carboxylic acids from Grignard's reagent, basically by treating it with carbon dioxide in presence of dry ether, fine? तो यहाँ पे plus minus again the same thing will take place. As we know, the Grignard reagent and nitriles can be prepared from alkyl halides, and we have done this already. The above methods are useful for converting alkyl halides into corresponding carboxylic acids having one carbon atom more than that present in alkyl halides. So you'll ascend the series. Next up, we have from acyl halides and anhydrides. Acyl halides और anhydrides. अब हमारे पास एसिड क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड्स ये
When you hydrolyze it with water, give carboxylic acids or more readily hydrolyzed with aqueous base to give carboxylate ions. अगर base ले लिया है, you get carboxylate ion, which on acidification provide corresponding carboxylic acids. इसको finally हम acidify करते हैं, ठीक है? जो हमारा carboxylate ion होता है वो हमको वापस carboxylic acid देता है. This is about the acid chloride. So we have benzoic anhydride next. ठीक, benzoic anhydride में again बेसिकली इट इज एसिड एनहाइड्राइड. अगर एनहाइड्राइड है, इसको वाटर दे दो, हाइड्रस कर दो, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा. ठीक है, वेरी इजी. एनहाइड्राइड जो होते हैं ना, बेसिकली हम वो बनाते ही ऐसे हैं कि हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनको डिहाइड्रेट करते हैं, वहां से हमें एनहाइड्राइड मिलता है. तो जब एनहाइड्राइड को वापस पानी देंगे, वापस से यील्ड क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपल. सिमिलरली बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड. ठीक, डिपेंड्स कि अब हमने दो तरफ कौन से दो ग्रुप्स लिए. एक तरफ हमने यहाँ पे बेंजीन लिया हुआ है, दूसरी तरफ you have taken एथेनोइक इथेन ग्रुप. ठीक है, बीच में ऐसे दो एसिड्स ले लिए, बेंजोइक एसिड ले लिया, एथेनोइक एसिड ले लिया, वाटर रिमूव किया और हमें मिला एनहाइड्राइड. इसको वापस वाटर दे दो, यू विल गेट बेंजोइक एसिड एंड यू विल गेट एथेनोइक एसिड. फाइन. दिस इज वेरी इजी. मैंने बिगिनिंग में भी बोला था. फ्रॉम एस्टर्स कैसे बनाएंगे? यू हैव दिस ethyl benzoate. Acidic hydrolysis of esters gives directly carboxylic acids while basic hydrolysis gives carboxylates. मैंने आपको समझाया कि जब भी हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट मिलेगा, उसको बाद में आप एसिडिफाई करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. बट इफ यू आर डूइंग इट एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. दिस आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. over here acidic hydrolysis हो रहा है, as you can see, and you are getting directly the benzoic acid. और ये हमारा क्या था? This was our ester. This was ethyl benzoate. Fine. एक तरफ ethyl group था, दूसरी तरफ benzene group था. Similarly you have ethyl butanoate. अब basic hydrolysis कर रहे हैं तो क्या बनेगा? You will get first the carboxylate ion and then after acidifying you will get the carboxylic acid. Next up we have the physical properties, right? Yes. Aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atoms, huh? 9 tak bhi. They're colorless liquids at room temperature with unpleasant odors. The higher acids are wax-like solids and are practically odorless due to their low volatility. Carboxylic acids are higher boiling liquids than aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular masses. क्यों ज़्यादा boiling point है इनका? Higher boiling means having a higher boiling point. This is due to more extensive association of carboxylic acid molecules through intermolecular hydrogen bonding. Most expensive sort of hydrogen bonding you can find it only in carboxylic acids. इसीलिए they are very very high boiling compounds as compared to comparable molecular mass वाले aldehyde, ketone, alcohol. Fine. The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acids exist as dimer in the vapor phase or in the aprotic solvent. The dimer exists करेगा. Why? Because hydrogen bonding, extensive hydrogen bonding even in the vapor state. Simple aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to the formation of hydrogen bonds with water. ठीक है, छोटे कार्बन 4 कार्बन आटम तक. Solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Aldehyde ketone में भी हमने सेम थ्योरी पढ़ा था. जितना ज्यादा ज्यादा कार्बन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट of the carbon chain increases. Obviously, hydrocarbons are hydrophobic, so solubility will decrease. That's what it's trying to explain here. The solubility decreases with increase the number of carbon atoms. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water because it's highly hydrophobic. ठीक है, benzoic acid को आप ठंडे पानी में insoluble ही पाएंगे. Carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvents like benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. Obviously, like dissolves like. अगर polar में नहीं हो रहा है तो non-polar organic solvent होगा ही होगा. Coming to the chemical reactions. The reaction of carboxylic acids are as follows. पहला था cleavage of the wet bond. Okay, अब हम ये वाला bond leave कर रहे हैं. ठीक, पहला is given the reaction with metal and alkali. ठीक है, metal ले लिया, base ले लिया, what happens? Carboxylic acids like alcohols evolve hydrogen with electropositive metals and form salt with alkali similar to phenol. अल्कोहल्स भी क्या करते थे? ब्रिस्क एफर्वेसेंस. जो ही मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन इज रिलीज. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मेटल ले लिया, तो हमारा क्या बन रहा है? एक तो कार्बोक्सिलेट आयन तो बन ही रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड H गैस. सिमिलरली विद बेस क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है और अपना सॉल्ट मिल रहा है.
because this is acid, this is base, acid base reaction, neutralization. Fine. However, unlike phenols, they react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. So weak base, हाँ, bicarbonate, carbonate, they're weak bases. इनके साथ भी react करेगा और क्या देगा? To evolve carbon dioxide. This reaction is used to detect the presence of carboxyl group in an organic compound. तो test की तरह carbon dioxide निकला, it had a carboxylic group. Fine. Carboxylic acids dissociate in water to give resonance stabilized carboxylate ions and hydronium ion. ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने पे क्या मिलेगा? कितना H2O पॉजिटिव मिलेगा? ये H बाहर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आएगा. This is negative pi incorporation. This will result in resonance stabilization. तो ये आप देख सकते हैं. This is resonance hybrid and these are the canonical structures. Fine. Moving on. For the above reaction, अच्छा अब यहाँ पे they have gotten the equilibrium constants and everything over here. 11th में equilibrium पढ़ा है. They're saying K equilibrium is the equilibrium constant. Ka is the acid dissociation constant. Basically हम यहाँ पे लेते हैं product का concentration upon reactant का concentration. You might have done it already. For convenience, the strength of an acid is generally indicated by pKa value. We know this rather than its Ka value. pKa means what is P? P का एक ही notation होता है, which means negative log. Fine. So pKa means negative log Ka. तो ये आपको acidic strength बोलेगा. The pKa of hydrochloric acid is -7, whereas the pKa of trifluoroacetic acid, the strongest carboxylic acid, याद रखना है, it is trifluoroacetic acid. Trifluoroacetic acid is the strongest carboxylic acid. Benzoic acid and acetic acid are these respectively. Fine. Moving on now. Uh-huh. Similar, smaller the pKa, the stronger the acid, है ना? The better it is as a proton donor. जितना कम pKa, obviously it's inversely proportional to the acidic strength. Strong acids have pKa values less than 1. The acids with pKa values between 1 and 5 are considered to be moderately strong acids. Weak acids have pKa values between 5 and 15. जितना ज़्यादा pKa, 5 to 15 means extremely weak acids. उनका कितना जाता है? Even greater than 15. So more the pKa value, lesser is the acidic strength. Carboxylic acids are weaker than mineral acids, है ना? हमें पता है, but they're stronger acids than alcohols and many simple phenols. तो ऐसे एक हमारा chronological order में अगर हम देखेंगे तो carboxylic acids mineral acids से तो weak है, but in comparison to alcohols, they're stronger acids. In fact, carboxylic acids are amongst the most acidic organic compounds you have studied so far. You already know why phenols are more acidic than alcohols. The higher acidity of carboxylic acids as compared to phenols can be understood. Similarly, हमने देखा already phenols क्यों alcohol से ज़्यादा acidic strength दिखाते हैं. वहाँ पे भी हमने रीजन पढ़ा था phenol was more acidic. Why? Because of the stabilization of the phenoxide ion through resonance. So it has a tendency to release a proton very easily. Similar situation हमारा carboxylic acids में भी होता है. The conjugate base of carboxylic acid, a carboxylate ion, is stabilized by two equivalent resonance structures in which the negative charge is at the more electronegative oxygen. And हमने अभी देखा ना, हमने जब hydrolyze किया carboxylic acid को, proton बाहर आ रहा था, resonance stabilization. This means more tendency to release the proton. The conjugate base of phenol, a phenoxide ion, has non-equivalent resonance structures in which the negative charge is at the less electronegative carbon atom. Therefore, resonance in phenoxide ion is not as important as it is in carboxylate ion. Further, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atoms in carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over only one oxygen atom. तो अल्कोहल में एक ही ऑक्सीजन एटम था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स है जिनके ऊपर ये delocalize हो सकता है. Thus, the carboxylate ion is more stabilized than phenoxide ion. So, carboxylic acids are more acidic than phenols. Fine. Again, इसमें आपको resonance stabilization का पता होना चाहिए. Effect of substituents on the acidity of carboxylic acid. Substituents may affect the stability of the conjugate base and thus also affect the acidity of the carboxylic acids. अब ये जो strength पे सवाल आते हैं ना, बहुत आते हैं. Acidic strength, basic strength. अब हमें कैसे पता चलता है? वो वहाँ पे डालते हैं options में different groups डालते हैं. यहाँ पे very beautifully they've explained over here. If you have an electron withdrawing group, हाँ, it will stabilize the carboxylate ion. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी तरफ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है एंड इट स्ट्रेंथन्स द एसिड. क्योंकि जितना स्टेबल हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली जो है प्रोटॉन लॉस होने वाला है.
एंड एज अ रिजल्ट उतना ही ज्यादा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। फाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, उसको और इंक्रीज करेंगे, दे विल डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेंस दे विल वीकन द एसिड। फाइन, सो यहाँ पे ये यही कह रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय स्टेबलाइजिंग द conjugate base through delocalization of the negative charge by inductive or resonance effects. Conversely, electron donating groups decrease in the acidity by destabilizing the conjugate base. जितना उसको नेगेटिव वो ऑलरेडी है उसको और दे रहे हैं, डिस्टेबलाइज हो गया कॉन्जुगेट बेस, बेस नहीं बनेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, एज अ रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो रही है। अब इन्होंने यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। ठीक है, तो किसका कितना इफेक्ट होता है। Fine. Thus, the following acids are arranged in order of increasing acidity based on the pKa value. So यहाँ पे इन्हें यही ग्रुप्स इधर डाले हुए, so you know you can understand कि किसकी कितनी ज़्यादा acidity होगी जिसका conjugate base जो है वो ज़्यादा strong हो। Direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid, contrary to the decrease expected due to resonance effect shown below. This is important. See, हमारा ये carboxylic acid group था, सी डबल बॉन्ड ओ एच, हमने क्या लगा दिया, हमने लगाया विनाइल ग्रुप। कूल, विनाइल लगाया टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे एसिडिटी इंक्रीज हो गई। फाइन, नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू विच कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच्ड। ये जो है ना, दिस इज द sp2 कार्बन, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। फाइन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फिनाइल of aromatic carboxylic acid increases their acidity while electron donating groups decrease their acidity. Similarly यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा this is 4 methoxy benzoic acid, then you have benzoic acid, you have इधर पे pKa values दिए हैं for you all to compare. Fine, moving on, we have reactions involving now the cleavage of COH bond. अब हम COH bond, ये वाला bond जो है इसको cleave करें। ठीक, carboxylic acids on heating with mineral acids such as H2SO4 or with P2O5 give corresponding anhydride. तो अभी हमने किया था, हम क्या करते हैं, हमने ले लिए हैं दो यहाँ पे एथेनोइक एसिड्स। फाइन, इनको हम कर रहे हैं, जब एसिड देते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एसिड्स आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एंड वी गेट एथेनोइक एंड हाइड्राइड। अभी देखा था हमने, इसका भी रिवर्स रिएक्शन ऊपर देखा था, esterification. Carboxylic acids are esterified with alcohols or phenols in presence of a mineral acid such as concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst. हमने ले लिया H positive as a catalyst, acidic medium ले लिया, जब भी carboxylic acid को alcohols के साथ react करवाएंगे हमें मिलेंगे esters, एस्टर एंड वाटर। ये भी आपको याद रखना है, एस्टरिफिकेशन हमने अल्कोहल्स में भी किया था, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड वी गेट एस्टर्स। फाइन, यहाँ पे थोड़ा मैकेनिज्म दिया हुआ है ऑफ एस्टेरिफिकेशन, तो इन्हें इसको बहुत इजीली डायग्रामेटिकली दिखाया है। पहले तो हमने ले लिया ना इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव ले लो, और ये जो H पॉजिटिव है ये प्रोटोनेट करेगा हमारे कार्बोनाइल ऑक्सीजन को। फाइन, इसके बाद ये OH पॉजिटिव बन रहा है और अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ये तैयार है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोहल, ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है, अटैक कार्बन। नाउ कार्बन पे क्या होगा, अगेन डबल बॉन्ड टूटेगा, टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, हमने ऑलरेडी किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। इसके बाद क्या होता है, ये जो O पे पॉजिटिव आ रहा है, अनस्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्रोटॉन बाहर आ गया, ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल, इट कम्स आउट। फाइन, ये इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे अगेन दिस अब कार्बन के तो 3 ही वैलेंसीज है, उसको फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगेन ये प्रोटॉन वापस देगा। ठीक है, दिस इज अ प्रोटोनेटेड एस्टर, व्हेन इट रिलीजेस दिस प्रोटॉन in the form of H positive and you will get the ester back. RC double bond O R. Fine. तो ऐसे ही किया, बेसिकली हमने इस H को रिप्लेस कर दिया हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ। फाइन, ये यहाँ पे लिखा भी यही है, the esterification of carboxylic acids with alcohol is a kind of nucleophilic acyl substitution. Protonation of the carbonyl oxygen activates the carbonyl group towards nucleophilic addition of the alcohol. Proton transfer in the tetrahedral intermediate converts the hydroxyl group into OH2 plus group, which being a better leaving group is eliminated as neutral water molecule. The protonated ester so formed finally loses a proton to give the ester.
अब बहुत इजी से रिएक्शंस है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल्स एंड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। ठीक, ये जो OH ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, बिल्कुल अल्कोहल्स की तरह हमने तीनों रिएक्शंस अल्कोहल्स में भी किए। ठीक है, तो क्या होगा, OH ग्रुप इजीली बाहर आ जाएगा। हम कौन सा क्लीवेज कर रहे हैं, COH बॉन्ड का क्लीवेज, सो वही हमें इसमें डिस्कस करना है। तो PCl5 लेंगे, Cl3, SOCl2 लेंगे, तो क्लोरीन इजीली विल गेट अटैच्ड। ठीक, एसिड क्लोराइड मिल गया, वहां से बचेगा POCl3 एंड HCl। बस PCl3 में हमारे पास POCl3 नहीं निकलता है, H3PO3 निकलता है। बेसिकली जो हमारे पास PCl5 होता है, इट इज लाइक दिस। हमारे पास दो जो होते हैं एक्शल बॉन्ड्स होते हैं, और तीन जो होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं। एक्शल बॉन्ड्स बीइंग वीकर, ये दो क्लोरीन इजीली लूज हो जाएंगे, और ये हमारे पास रह जाता है। फाइन, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है हमारे। फाइन, ये आपने शेप्स वगैरह में किया होगा ऑलरेडी, आई एम श्योर। सिमिलरली SOCl2 से करो तो RCOCl बनेगा। दिस बेसिकली हम यहाँ से एसिड क्लोराइड बना रहे हैं व्हेनेवर वी मेक इट टू रिएक्ट विद PCl5, PCl3, SOCl2। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन, और बाहर आएगा SO2 एंड HCl, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। वाई, ली चार्टलियस प्रिंसिपल, दो गैसेस है, एस्केप करेंगे, रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड direction. Reaction with ammonia. Carboxylic acids react with ammonia to give ammonium salt. ये ammonium acetate, which on further heating at high temperature gives amides. Again, अब हम amide कैसे बनाएंगे, हमें दिया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में किया था ना। इवन एमाइड्स आर क्लोराइड्स, ऑल ऑफ दीज एनहाइड्राइड्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अमोनियम साइनेट मिलेगा। ठीक है, और इसको हाइड्रोलाइज करने के बाद एसिटामाइड मिलता है। वेरी इजी, that is H2O will come out and you will get acetamide over here. Similarly, ये हमारा carboxylic acid, ये हमारा ammonia, ये हमारा ammonium benzoate, hydrolyze, you will get benzamide. Fine. यहाँ पे इन्हें एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन दिया है, ये हमारा थैलिक एसिड है। ठीक, इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम थैलेट मिलेगा, अगेन हाइड्रोलाइज करेंगे, थैलेमाइड बनेगा। अगर ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे, यहाँ से अमोनिया कैन कम एक्चुअली कम आउट और हमें थैलेमाइड मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। but that's only on strong heating with the removal of ammonia molecule. Next up, we have reaction involving COOH group. सीधा हम क्लीवेज देख रहे थे, OH ग्रुप के वजह से, CO बॉन्ड की वजह से। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके वजह से ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज, ऐसे कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सो द फर्स्ट वन इज गिवन रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स। जैसे हम अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, हम उसका टेढ़ा भी कर सकते हैं ना, एडिशन रिएक्शन, कन्वर्जन सीरीज, वेरी इजी, बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाई बोरेन। ठीक है, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। फाइन, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करता sodium borohydride. Fine. Next up we have decarboxylation. Very easy. Decarboxylation में हमेशा क्या लेते हैं, सोडा लाइम लेते हैं, isn't it? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, और हमारा सोडियम कार्बोनेट बाहर आता है। हमने ये पहले भी किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन द सोडियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या होता है, बेसिकली 3:1 के रेशियो में NaOH and CO आर टेकन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हमें क्या मिलते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाता है और हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। Alkali metal salts of carboxylic acids also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solutions and form hydrocarbons having twice the number of carbon atoms present in the alkyl group of the acid. This is known as Colby's electrolysis. ये भी हमने haloalkanes वगैरह में कर लिया था ऑलरेडी। ठीक, तो अगर हम सॉल्ट भी लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, इवन दैट विल अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन बट ओनली ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। वेरी इजी, हेलोजिनेशन करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर है, उनको हेलोजिनेट करेंगे एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ऐसे जितना मुश्किल है उतना इजी है, बेसिकली कुछ नहीं करना। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द वट एवर हेलोजन यू हैव टू अटैच। ठीक है, वो ले लिया, और हमारा रेड फॉस्फोरस ले लिया। फाइन, एंड दिस इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यहाँ पे यू विल गेट अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, यहाँ पे हेलोजन कौन सा लेंगे, वी विल टेक क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओवर here according to the NCERT.
लास्ट है हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन. Aromatic carboxylic acids undergo electrophilic substitution reactions in which the carboxyl group acts as a deactivating and meta directing group. जैसे OH में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मेटा डायरेक्टिंग. तो अगर हमने गलती से भी सब्स्टिट्यूशन करा लिया रिंग में, तो कहाँ जाएगा सब्स्टिट्यूट, कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा. They however do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride gets bonded to the carboxyl group. तो Friedel-Crafts reaction, फिर वो alkylation हो acylation हो, हमारे पास ring substitution में नहीं होता in case of carboxylic acids. Why? Carboxyl group already deactivating है और जो catalyst है वो उसके साथ bond बना लेता है. You can see meta nitrobenzene as the major product. यहाँ पे again meta bromobenzoic acid. This will act as a deactivating group. Uses very easily. Methanoic acid is used in rubber, textile dyeing, leather, and electroplating industry. Ethanoic acid is used as solvent and as vinegar in food industry. Ethanoic acid ही है जो हम vinegar के तौर पे use करते हैं. और hexane dioic acid in the manufacture of nylon 6,6. Again polymers में हम इसको बहुत detail में करेंगे, हम ये पूरा reaction करेंगे. Esters of benzoic acid are used in perfumery. Sodium benzoate is used as a food preservative. ठीक है, sodium benzoate. Higher fatty acids are used for the manufacture of soaps and detergents. I think this summary, I think you can do by yourself, and you should do it by yourself. Otherwise, video बहुत लंबी खींचती है. And I just hope this video was helpful for you. And keep studying, keep learning, and thank you so much for watching. I'll see you in my next one. Bye.